Today we will discuss the topic from English grammar. The topic which I have taken, that is the pronoun. And in the category of pronoun there is one personal pronoun, और उसी पर्सनल प्रोनाउन में स्टूडेंट्स को ज्यादातर दिक्कत होती केस इन प्रोनाउन. तो आपकी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग देयर आर थ्री केसेस इन इंग्लिश ग्रामर. either it is a noun or pronoun. The cases are subjective case, objective case और possessive case. और पर्सनल प्रोनाउन में जो लिस्ट होती है वो होते हैं फर्स्ट पर्सन. तो इन फर्स्ट पर्सन देयर कम्स आई एंड वी. इन सेकंड पर्सन देयर कम्स यू. और इन थर्ड पर्सन ही सी दे. और इम्पर्सनल प्रोनाउन इज इट. तो स्टूडेंट्स को अक्सर कर इनके केसेस करने में दिक्कत होती है कि वेयर दे कैन यूज ऑब्जेक्टिव केस, वेयर दे कैन यूज पॉजेसिव केस. तो वी आर राइटिंग द केसेस सेपरेटली. द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी एंड पॉजेसिव केस ऑफ आई इज माई. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी इज अस. And possessive case of we is are. The objective case of you is you, same. And possessive case of you is your. The objective case of he is him. And possessive case is his. The objective case of she is her. And the same is in possessive case, that is her. The objective case of they is them. And possessive case of they is their. And for it, the objective case is it. And possessive case is its. These are they come in personal pronoun category. And in personal pronoun category, these are the cases in pronoun, so that students can use these cases in a right way. अक्सर कर हमें यूज करने में दिक्कत होती है, but by making this chart, by understanding only this chart, we can easily use the cases for noun and pronoun both. If the person is masculine gender, then we will use him and his. If that is in feminine gender, to her and her. That is, thank you. And I think that you have got the valuable information and you will use that. Thank you.